So friends, a very warm welcome to all respected valuers, engineers, architects, chartered accountants, real estate professionals, students, and valuation enthusiasts. We are delighted to introduce you to the Registered Valuers Club, an exclusively YouTube platform powered by Council of Engineers and Valuers, CEV Group, one of India's most trusted names in the professional valuation fraternity. In today's rapidly evolving financial and regulatory environment, valuation professionals play a pivotal role in maintaining economic transparency and corporate integrity. The Registered Valuers Club has been created with a powerful mission to educate, empower, and evaluate valuers across the nation. Here you will find expert discussions and interpretations on valuation standards, case studies, and practical insights from industry leaders, latest updates on IBBI, MCA, and other regulatory frameworks, guidelines on examination, eligibility, compliances, and career growth, field-based knowledge on land and building, plant and machinery, and securities or financial assets valuations, webinars, interviews, frequently asked questions, and more educational resources. Our goal is to build a strong, informed, and united community of valuation professionals who uphold competence, ethics, and excellence in every assignment. Friends, whether you are preparing to become an IBBI registered valuer, looking to enhance your professional capabilities, or interested in staying ahead with current valuation practices, this channel is your learning hub. So make sure to subscribe, like, and share the knowledge and with others who aspire to grow in this profession. Together, let us strengthen the foundation of India's valuation ecosystem. Thank you and welcome to the Registered Valuers Club, where valuers rise, lead, and transform. Here we bring you expert guidance for IBBI registered valuer aspirants, latest regulatory updates, IBBI, MCA, RBI, and others, practical case studies with valuation methodologies, professional insights from industry leaders, training on land and building, plant and machinery, and securities or financial asset valuations, career support, frequently asked questions, and compliance knowledge. Our mission is to educate, uplift, and connect the valuation fraternity through high quality, authentic, and practical content. Whether you are a student or emerging valuer or an experienced professional, this channel is your gateway to continuous growth and excellence in valuation. So subscribe now and join India's fastest growing community of valuers. Together, let us build a stronger, compliant, and future-ready valuation ecosystem. The official name of the... So friends, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe our official YouTube channel, Registered Valuers Club. And you can also find the related videos and articles and other related informative material on our official website, that is www.cevnews.in. You can log in and you can also subscribe this website, and all the contents will be provided to you free of cost on your mobile screen or laptop or desktop. And if you feel any difficulty, question, or query, you are always welcome to call me on 9041263607 on my personal mobile number. Thank you very much for watching this video. Any difficulty during your preparation, or otherwise if you have any doubt, you can contact us, get in touch with us. Part of your valuation profession which you have been doing so far, and as an engineer and as an architect, are those
who are in the profession, they have not learned certain things such as economics, general laws, statistics. Of course, you may have done statistics, your engineering or architectural course, but as far as economics, statistics, and general laws, principal insurance, etc., is concerned, many of us have not done these things. So your journey start from here, and during your preparation, if you have any doubt, if you have anything to discuss after the classes are over, you can contact with us. These are the contact numbers. Sandeep ji and my number is given here. You can reach out to us on your these mobile numbers for any guidance related to valuation examination particularly. So as far as this training is concerned, we will be concentrating mainly on the syllabus prescribed for IBBI examination. But there are certain things which are not mentioned in syllabus, but as a value you must know, which are important from practical valuation point of view. We will also discuss those points. And the first thing, as far as syllabus of IBBI examination is concerned, is microeconomics. So there are two topics in economics. First topic is microeconomics and the second topic is macroeconomics. So what is macroeconomics? Anybody who can tell what is macroeconomics? That which is used for small industries, individual markets. So yes, thank you Nishiji for your valuable input. So it is branch of economics that deals with the behavior and performance of small market. So basically on the, we can say, your city point of view, your town point of view, your state point of view. So that branch which deals with the performance and behavior of the small market segment such as firms and households, that is called microeconomics. So as a value, you must understand the difference between micro and macro. So we will discuss the macroeconomics as it will come. So if you want to know the certain examples of microeconomics, these are the examples. Consumer behavior. Consumer behavior as an individual or as a group of consumers. Then labor market, that is part of this microeconomics. Supply and demand in an individual market. See here the word is supply and demand in an individual market. And on the basis of these things, you have to make vital decisions. Government or the local government authorities, they have to make certain decisions based upon these factors. Even as an individual, when you have to decide about your budget or what amount you can spend, these factors affect you as an individual also. So this is microeconomics. So anybody having any doubt about the word thing, what is microeconomics? So next thing is consumption. Consumption means, what is consumption basically? Anybody who can explain the word consumption? कंजम्पशन जो हम लोग डेली नीड्स में यूज करते हैं, जिसको कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन.
So basically, if we think it from the household's point of view in microeconomics, the things which you use, goods or services which you use in the household. It may be goods and it may be services which are used by the households. They are called consumptions. So if we think from the economic point of view, basically economic growth is based upon this word consumption. So you as an India has a huge population, 140 crore, and all the world manufacturers, they know they have a good market where there are lot of consumers who can consume their products. So this is consumption. So there are different types of consumptions. So it will depend upon the capacity of an individual based upon his earning, based upon the money he has, he will consume accordingly. So there are certain things which last long for a long time. They are called durable goods. So which you cannot change, which you cannot consume daily or in a short span of time, such as cars, appliances, furniture, etc. These are called durable goods. For example, you buy a refrigerator and you will be using it for a number of years. You cannot replace it within a 15, 20, 30, 40 days. You will be using it for a number of years, for several years. And then there are non-durable goods. So those goods which are consumed quickly and which needs to be purchased frequently, they are called non-durable goods. For example, you buy grocery. You have to buy grocery daily, on a daily basis. And of course, you consume it within a short period of time, 15, 20, 30 days. These things are called non-durable goods. And then services. So what is services? Basically, you do the valuation. You are a service provider. So in case of durable and non-durable goods, they are tangible products. But services, they are intangible products. What do you mean by intangible? Anybody? What is that intangible? we cannot touch. So that we cannot touch. So this is one of the types. Services are intangible products. Physically don't exist. Physically don't exist. So such as healthcare, education, entertainment. For example, you go to a doctor's clinic and you pay him for the service provided by him. So that is paying for a doctor's visit. That is one type of services. So these are the three things you must understand. What is consumption? What is durable goods? What are non-durable goods? What are the things which comes under the heading of services? Anybody having any doubt? So now we will be discussing what are the factors which
influence consumption. So basic thing is in consumption, the buying power. But if you have money with you, you can buy anything. But if you don't have a sufficient amount with you, you will have to buy according to that. So basic thing is money or purchasing power in consumption. There may be certain other factors, we will be discussing those factors also. But the main thing is purchasing power. So from where the purchasing power comes? It is the income of an individual or income of the society as a whole. So higher income means higher consumption. So means if you have higher income means you have large amount or more money with you. So you can, of course, the consumption will increase. For example, a salary increase might lead to spending on luxury items, or if a family gets a bonus on Diwali, they can spend more upon luxury items. They can buy a car or many other things, or they can plan a vacation accordingly. So that first thing is consumption, income. Second thing is price. So price of products affect consumption. Products means goods and services. So higher prices, less consumption. Lower prices, higher consumption. For example, if the petrol prices are increased, it will affect the consumption. It will decrease consumption. And if the petrol prices are reduced, it will increase the consumption. So first thing is income, second thing is prices, and third thing is consumers' confidence. Consumers' confidence is also very important factor. If the consumers are feeling optimistic about the state economy of the country, economy is growing, general trend of economy is good, so they will be paying more. So they can invest in luxury items such as cars and homes, etc. during this period. If the economy is growing, they know if they invest in homes, the prices of homes will be increasing during the coming years. They have the confidence if the economy is growing. And then interest rates. So many times for buying luxury items such as cars, or of course for buying homes, etc., consumers have to take loans from the banks. And if the interest rates are lower, banks are offering loans at the lower interest rate, more and more persons will be buying luxury or items, or they will be investing in homes, etc. So interest rates are very important factor. Lower mortgage rates can increase home buying. So basically, if you know the consumptions from household point of view, where a household generally spent, many of those who do not have their own homes, they have to spend for rent, they have to spend on utilities, then on foods and entertainments.
So these spendings are important for local economy, local business, local services, etc. So clear hai? Anybody having any doubt about the factors which are affecting consumption? For example, अगर आपको किसी वक्त भी कोई भी डाउट आता है तो नीचे टूल्स में आपको हैंड रेज का ऑप्शन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं और आपको अनम्यूट करके फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनी टाइम। और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, जितनी बार मर्जी आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए और पूछ सकते हैं। रिएक्ट में नीचे देखिए, रिएक्ट का बटन है, रिएक्ट में हैंड रेज का ऑप्शन है, रिएक्शन का। आप उसमें हैंड रेज कर सकते हैं और आपको फिर जैसे ही फैकल्टी एक्सपर्ट वो टॉपिक पूरा करेंगे, आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना डाउट क्लियर करने के लिए। यस सर, ओवर टू यू। so for example, if family is having an income of 80,000, they spend 20,000 on rent, 10,000 on food, 5,000 on utilities, 5,000 on entertainment, etc. This is just an example. Then another important thing is automatic consumptions. Autonomous consumption. What is autonomous consumption? Anybody? What is autonomous consumption? What is autonomous consumption? जी सुमेधा जी, please unmute yourself. जी गौरव गुप्ता जी. Sir, spending for survival, that is called autonomous. Yes. So whatever the situation is, whatever the your economic condition is, you have to spend on certain items, such as on food items. Regardless of your income level, you have to spend on certain items, such as food and shelter. Roti, kapda or makan. You have to spend on them. So such type of things are called autonomous consumption. So even during economic downturns, people still have to buy basic necessities like bread and milk, etc. Next is induced consumptions. So दोनों में difference क्या? What is the difference between autonomous? Autonomous means you have to buy, but induced consumption means if you have money, you can buy. There are certain things which can be bought only if you have enough money. After spending for these autonomous consumptions, if you have left with some money, then you can buy these items. These are called induced consumptions. That varies with the income levels. If the income allows you, you can buy these items. For example, you got a big bonus from the work, and with that bonus, it will depend upon the amount you got. You can go for a dining out, or if you have enough money, you can purchase a new gadget. So these type of consumption are called induced consumption. That depends upon your purchasing power. Clear? Anybody having any doubt? Difference between autonomous and induced consumption. The next thing is you may get one last question about from these curves, which are called indifference curve. So see this figure. This is called
indifference curve. So let us suppose a person, he can be satisfied by either by hot dogs or hamburgers. So all these points A, B, C, which are lying on this line curve, which is called indifference curve, it will give equal satisfaction to that person. Means if he have 14 hot dogs and 20 hamburgers, or if he has 10 hot dogs or 26 hamburgers, or 9 hot dogs and 41 hamburgers, it will give him same utility, same satisfactions. All those points which are lying on this curve, these two things, they will be providing the same satisfaction, same utility. So all points lying on this indifference curve, they will be providing same utility to the person without affecting the number of things. These two, there are two things here. So these are called indifference curve. This was many times you may get questions who would develop this. J.R. Hicks and RGDLS, they provide this indifference curve. Okay, so each of these three combinations, A, B, and C, they provide the same utility for a consumer. All the points lying on, so how these points are find out, you need not to go in details. But just remember that all the points which are lying on this indifference curve, they will be providing the same utility, same satisfaction to a consumer. Clear? So this indifference curve, this slopes from left to right. These are the properties. Many times you may get 1 mark question. It slopes downwards from left to right, means it is having a negative slope. Then we will be discussing what is this marginal rate of substitution. Just understand this, the slope of indifference curve at any point is equals to marginal rate of substitution. We will be discussing what is this marginal rate of. And if you have a number of indifference curves, they cannot cut each other. And this it is convex to the origin. This curve is convex to the origin. See the shape of this curve. You may get 1 mark question about this. And they never touch either axis. So if we take it from Indian example, let us suppose a household have to choose between wheat and rice for monthly. A family consuming 10 kg of wheat and 5 kg of rice may feel equally satisfied with 6 kg wheat and 8 kg rice. Both combinations lies on the same indifference curve. So next thing is marginal rate of substitution. So we will be discussing what is the marginal rate of substitution. So we will be taking an example that will make the things more clear to you. Rather than going for its definition, we will be discussing. So what will happen? Let us suppose
a student is consuming apples and bananas. There are two goods, goods X and goods Y. The student is consuming apples and bananas to maintain a specific level of satisfaction. So first situation, the student has many bananas but few apples. Let us suppose student is having 20 bananas and 1 apple. And he is willing to give 5 bananas for getting a second apple. एक स्टूडेंट के पास या तो वो बनाना और एप्पल दोनों से सेटिस्फाई हो सकता है. उसके पास पहली सिचुएशन है, ही इज हैविंग 20 bananas and 1 apple, and for getting another apple he is ready to give up 5 bananas. So this marginal rate of substitution, 5 bananas for 1 apple, marginal rate of substitution is 5 upon divided by 1, that is 5. Now he has 15 bananas and 2 apples. First he was having 20 bananas and 1 apple. Now he has 15 bananas and 2 apples. Now he will not be ready to give 5 bananas. Now he is ready to give 3 bananas to get the third apple. So now MRS, marginal rate of substitution, comes down to 3 volt divided by 1, 3. Now he has 5 and 3, he has given 8 bananas. So he has 12 bananas and 3 apples. And now for getting next apple, he may only sacrifice 1 banana. So now the marginal rate of substitution becomes 1 divided by 1. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो नंबर ऑफ बनानास जो उसने एक्सचेंज करने थे वो कम होते गए. This is called marginal rate of substitution. Is an economic principle stating that as a consumer increasing their consumption of one good X while keeping the total satisfaction constant, they are willing to sacrifice fewer and fewer units for goods Y. Goods X जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन जो है बढ़ती गई, वो गुड्स X की जो सैक्रिफाइस था वो कम होती गई Y को लेने के लिए. That is called marginal rate of substitution. So it is basically diminishing marginal rate of substitution. ये diminish होता गया, कम होता गया. क्लियर है ये बात एग्जांपल से? Anybody having any doubt? So what is diminishing marginal rate of substitution? क्लियर? दिस एग्जांपल अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो शायद नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर ये एग्जांपल देखोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा. अगर आपको कोई भी डाउट है आप स्क्रीन के नीचे देखिए रिएक्ट का एक जी बटन सचिन है. जी. अगर आपको कोई भी डाउट है स्क्रीन के नीचे रिएक्ट का बटन है, उसको क्लिक करिए. वहां पर हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, रेज हैंड को दबाइए. देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया है, मेरे स्क्रीन के ऊपर हाथ ऐसा स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा पंजा नजर आ गया. रेज हैंड जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं. और जब आपका काम हो जाए तो उसके बाद अब आपका आंसर मिल जाए तो आप उसको लो हैंड कर सकते हैं. जैसे अभी सचिन जी ने पूछा. सचिन जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो देखिए जैसे जैसे था, पहले उसने 5 बनाना सेक्रीफाइस किए, फिर डिक्रीज होते गए, 3 हो गए, फिर 1 हो गए. जी सचिन जी.
Good morning, sir. Yes, Sir, coming to indifference curve, uh, please, sir. If the same person is ABC is having the same quantity between them, why the curve shows indifference between them, sir? Between the so ones. sir, it is basically it is not indifferent. It means it is not making any indifference. Basically, it shows that it is providing same utility, same satisfaction. That he may be what satisfaction he get from 14 hot dogs and 20 hamburgers, he will get the same satisfaction with the 10 hot dogs and 26 hamburgers. And he will be getting same satisfaction with these are the points. How these points are gone, that is a longer procedure. We do not want to go in detail for that. So basically, it will not make any difference. Means indifference. He's indifference to the satisfaction level. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. जी गौरव जी जी आप अनम्यूट शीट शेयर सर होगी क्या बाद में, क्योंकि ये चीजें नोट डाउन सर जी सारी शेयर होगी क्लास के पास संदीप जी कर देंगे ठीक ठीक थैंक यू जी जी स्वाति जी So please explain indifferent curve again. सर मैम दिस इज ये एक कर्व है जिसके ऊपर जो पॉइंट्स है ए बी सी एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें किसी एक पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो हैमबर्गर जैसे इसमें है इसके केस में क्या है कि Rice and wheat. राइस एंड व्हीट है हम Yes, sir. कभी हमारे घर में ये वो 10 kg व्हीट आ रहा है और 5 kg राइस आ रहा है Yes, sir. तो हमारा जो फैमिली मेंबर सारे इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं अगर हम 6 kg व्हीट और 8 kg राइस लेके भी सेम सेटिस्फेक्शन मिले हमें सेम यूटिलिटी हो जाए हमारा काम चल जाए ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां 15 आ रहा है और जहां 14 आ रहा है दोनों का सम ये कोई जरूरी नहीं है क्वांटिटी मायने नहीं रखती जहां हमारी यूटिलिटी हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो मायने रखती है Okay. कि हमारा जो काम 10 kg व्हीट और 5 kg राइस से चलना था वही काम हमारा अगर हम 6 kg व्हीट और 8 kg राइस लेंगे तब भी चल जाए ठीक है. ठीक है वो जो सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही कर्व पे लाई करेंगे वो कर्व की शेप ऐसी हो ठीक है Okay. ऐसी और भी नंबर ऑफ कर्व हम ड्रा कर सकते हैं एक ही पर्सन के लिए जी अमन जी अब अपने पहले अपनी वो करिए जी विनाश ये जो कर्व है इसमें इस सिचुएशन में जो भी मतलब नंबर्स है वो एक नंबर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा घटेगा तभी ये कर्व कंप्लीट जी होगा जी वो तो है वो तो जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है सर ये सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ये तभी होगा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा एक नंबर तभी बढ़ेगा एक हाँ नंबर कम होगा या जैसे ये एग्जांपल दिए सर और इसमें ऐसा नहीं है कि एक नंबर बढ़ेगा और घटेगा और उसमें ये भी चीज है कि जो आपका MRS है डिमिनिशिंग होता रहेगा कि जैसे वो ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हेयर 5 bananas and second time he was ready to sacrifice 3 bananas and it may be in the end he is ready to sacrifice only 1 banana of course one number will be reducing and other will be increasing जी अविनाश जी Sir, what is the use of this principle in our field? अभी आ Like रहा है where सर we can use it? अभी आ रहा है पर अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है अभी यहाँ आ पर रहा है सब जितने भी कुछ आप आएगा कॉमन सर सब्जेक्ट्स हैं सभी क्या का यूज आप लास्ट यूटिलाइजेशन है डे सर सब कुछ आएगा सर सभी का यूज आपको आने वाला है अभी यूज मत देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करिए अभी आ रहा है सर सर बहुत अगर कुछ आएगा समझ में आएगा तभी तो उसका यूज। अभी सर अविनाश जी अभी आ रहा है डोंट वरी इसका यूज अभी आ जाएगा ठीक है सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स ऑप्टिमम
कंज्यूमर्स ऑप्टिमम अब क्या यूज है, अभी शुरू हुआ है अविनाश जी। The equilibrium point where the budget line is tangent to the highest attainable indifference curve determine the consumer set. So अगर हम इसकी डेफिनेशन से जाएंगे तो समझ नहीं आएगी बात। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी कि क्या है कंज्यूमर्स ऑप्टिमम। Let us suppose Anjali is a student in New Delhi with a weekly budget of 200 to spend on 2 goods. देखिए अविनाश जी, अब समझ आएगा क्या यूटिलाइजेशन है इसका। The student Anjali, he has a weekly budget of 200 to spend on 2 goods, Maggie goods X and coffee goods Y. So price of Maggie is 20 per packet. Then price of coffee is 40 per packet. And then total income is 200. Now he want to maximize her satisfaction, but he has a budget of 200. Then how he can manage this her satisfaction with this amount of 200? See here. Let us suppose in the first condition, he consume one baggie, he will be spending 20 rupees, and if he has one coffee, he will be spending 40 rupees. Then if he has 1.5 packets of Maggie, he use and 1.5 cup of coffee, it will be 30 rupees and 60 rupees. Similarly, 2.5, and if he has 3 packets of Maggie and 3 coffees, how much amount he spent? 60 plus 120. He will be spending 180. He cannot go beyond. So now after spending this on 120, he is left with only 20 rupees. At 3 packets of Maggie and 3 cups of coffee, he will be spending 180. So he has only left with 20 rupees. It means maximum utility can be 3 cups of coffee and 3 Maggies. And let us suppose Anjali buy 4 packets and less 2 cups. And if we calculate MU Maggie and PU Maggie, how much amount he will be spending? 4 packets, 20 into 4, 80. And 3 packets, 2 cups of coffee. 80 plus 80, 160. So he is left with 40 rupees. So here, see here, he is left with a minimum amount of 20 rupees. Here he will be left with 60 rupees. So maximum he can do is he can buy 3 Maggie and 3 coffees. This is called optimum. This is called equilibrium point.
So this is optimum point, maximum he can spend, which he can spend. That is called. So if we get it from the point of view of this, the equilibrium point where the budget line is tangent to the highest attainable indifference curve determine the consumer's optimum. So you need not to go in details. You need to remember how this point is calculated and what is optimum. So next is consumer surplus. What is consumer surplus? कि अगर आप मान लो सिनेमा देखने गए, सिनेमा को आपको पता है कि टिकट उसकी 200 रुपये है, आप टिकट बाय करते हैं, वो आपको 150 की दे देता है कि आज 150 की मिलेगी आपको, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 50 रुपीज। वो जो आप पे करने के लिए तैयार थे 200, आप सोच के आए थे कि मैं 200 की टिकट लूंगा, लेकिन उसने आपको 150 की दे दी, तो जो 50 आपके पास बच गए, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। You were ready to pay 200, but you paid only 150. That balance amount of 50 rupees, that is consumer surplus. Consumer surplus equals to willingness to pay minus market price. समझ लगी कि what is consumer surplus? किसी को कोई डाउट है कंज्यूमर सरप्लस के, पूछो जी। समेदा जी, समेदा जी, हाँ जी। Okay, sir. That one more. Can you explain one more time? That consumer surplus. Sir, madam, you want to, you go to the cinema hall Okay, okay. for a picture. You know Okay. the टिकट के जो पैसे है वो 200 रुपये लगेंगे। हाँ, 200 रुपये। आप टिकट खिड़की पे गए, उसने आपको 150 की टिकट दे दी कि आज 50 रुपये कम हो गए हैं। हाँ, हाँ, that तो 50 rupees. आप 200 रुपये देने को तैयार थे, but 50 आपको मार्केट प्राइस उसका 200 था यार, लेकिन उसने आपको 150 में दे दिया, तो जो 50 आपके पास बच गए, that is plus. वो दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। Okay, thank you. ठीक है। सो कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि कंज्यूमर, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेड, उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है? तो आपको पता है कि जी गौरव गुप्ता जी। Sir, it may be negative. Someone wants to pay 200 rupees and market price is 300 rupees. So that is not consumer surplus, sir. Okay. Consumer surplus will be only when this equation holds good. Okay. If it is more than that, then it is not. Surplus means, what means surplus? Surplus, जो उसके it means if it is positive. It is positive. Thank you. If it is not positive, it is not surplus. Surplus means what extra you have with you. So incoming voice call from my love Chio Sukhi on Simpson 1. sometimes government has to intervene. तो क्या अब पूछ रहे थे कि क्या इसका फायदा है, नुकसान होता है? कंज्यूमर सरप्लस में क्या था कि यूवर, अब वही बात आ गई गौरव गुप्ता जी आपको कि 2019-20 में क्या था कि पहले
Onion के prices 20 rupees per kg थे, and all of a sudden it increases to 150 kg. So what happens? Now there will be dramatic erosion of consumer surplus. जो आपके पास बचा था उसमें से आपको खर्चना पड़ेगा. And in this situation, government has to intervene. What they do? They releases buffer stock, which we were having. गवर्नमेंट इंटरवीन करके जो उनके पास बफर स्टॉक था उसको रिलीज किया ताकि प्राइसेस डाउन आए. तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से बेसिकली क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस इरोड हो गया. सो कंज्यूमर सरप्लस आपको समझ लगी क्या है? कोई डाउट है कंज्यूमर सरप्लस में? तो अब कंज्यूमर सरप्लस का क्या फायदा क्या नुकसान है, क्या होता है? कि आपको पता था कि जियो ने क्या किया 2016 में? फ्री में आपको डेटा दे दिया, एक बार आपको लगा दिया उस पे, जो आपको 250 रुपये पर जीबी देना था उसको 0 पे ले. तो जो आप 250 खर्च रहे थे वो आपके पास बच गए. सिमिलरली गवर्नमेंट में एलपीजी, फर्टिलाइजर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब वो रिड्यूस करते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो इट इंक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस. What they were willing to pay and what they actually paid, that is consumer surplus. देखिए, इकोनॉमिक्स यहाँ पर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने बीकॉम का सिलेबस पढ़ना है या हमने कोई इस तरह का कोई इकोनॉमिस्ट बनना है. यहाँ पर आपको सिलेबस में इकोनॉमिक्स डालने का मतलब है एज अ इंजीनियर, एज अ वैल्यूअर, आपको इकोनॉमिक्स से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और कहाँ कहाँ उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल. बिना इकोनॉमिक्स के दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता. तो इकोनॉमिक्स का कहाँ कहाँ पर उसके प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हम एज अ इंजीनियर, एज अ वैल्यूअर उसको यूज करके आगे क्या होगा, ये सब कुछ हम ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे एज अ वैल्यूअर जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम ट्रेडिशनल तरीके से काम करते रहे. सिर्फ लैंड की वैल्यू निकाली, बिल्डिंग की वैल्यू निकाली, दोनों को जोड़ दिया, वैल्यूएशन दे दी. अरे दैट इज नॉट अ वर्क ऑफ अ वैल्यूअर. उससे ज्यादा तो एक पान वाले को, रिक्शा वाले को पता है लैंड की वैल्यू कहां पर क्या है और यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू क्या है. अगर उसको एरिया बिल्डिंग का नापना आ जाए तो वो आपसे ज्यादा अच्छी वैल्यू दे सकता है, एक प्रॉपर्टी डीलर या एक रिक्शे वाला या एक पान वाला या एक किराने की दुकान वाला. तो वैल्यूएशन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो अब इस सिलेबस में आपको दी गई हैं. यहां पर आपको अगर इस सिलेबस में सब्जेक्ट दिया गया तो इसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस है. और अभी ये सब कुछ ये सब आपको पता चलेगा लास्ट के 3 डेज में जब हम केस स्टडीज करेंगे. ये सारे प्रिंसिपल्स वहां पर इस्तेमाल होने वाले हैं. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी वर्ड बीइंग discussed during this session, because each and every word can be an MCQ during our examination. Over to you, sir. Thank you. ठीक है संदीप जी, we may have a 15-minute break. Yes, sir. Yes, sir. So friends, it is 11:25 now. We will have a short tea break of 15 minutes. It is 11:25. We will join sharp at 11:40. Prices, elasticity, competition are set. So almost where we have left in the micro, we will starting onwards to the macro. So first thing is functions and role of money. How the money is used. So first we will discuss about the primary functions of. So basically it is medium of change
Before the advent of money, there was barter system. कि एक चीज की बजाय आपने किसी का काम किया, उसने आपको वीट दे दी या राइस दे दी, प्रोडक्ट के बदले में आपने प्रोडक्ट दे दी, या सर्विस के बदले कोई और प्रोडक्ट दे दिया. दैट वाज बार्टर सिस्टम. So nowadays we have money which is used as a medium of exchange. It eliminates the double coincidence of loss. For example, when you buy grocery, you use money to pay for them instead of bartering goods like vegetable for breads, etc., which was previously during ancient times barter system was used. Then units of accounts. It provides common measures of value of rupees. For example, you can say the cost of this car is 10 lakh. The price of this laptop is 50,000 rupees. So these you can compare with them. On the basis of their price, you can compare two items, two semi-identical items or two different items on the basis of this money. So we call it unit of account. And then most important, store of value. It can be held over time. You can deposit money in the bank on which you will be getting interest also. Saving in a bank account ensures that you can use it later to buy goods or services, such as saving for a down payment on a house. That is storing. And then standard of deferred payments. Means you get a loan, let us suppose you get a loan, and you have to pay for that on later on. That is enable credit transactions. That is standard of deferred payment. You can get pay after some certain period of time. These are primary functions. Then secondary functions. Transfer of value facilitates movement of wealth across geographies. Means you can go to USA, you can convert your rupees into US dollars. So that is transfer of value over geographies. Then distribution of national income. So on the base, government or the companies are paying wages, rents, interest, profits, etc. in the form of money. This is distribution of national income. Then it is basis of credit. Banks or financial institutions, they create credit on the money base. And of course, it is the most liquid of all assets. So when a Mumbai developer pays a contractor in Pune via NEFT, money performs all the four primary functions simultaneously. It measures contract value, mediate payment, and defers balance payment settlements. So this is an example. So when you will be doing valuation from IBBI context, money's role as a unit of account and store value is critical when valuing assets of insolvent properties. The rupee-dominated balance sheet forms the basis of a resolution plan under Insolvency and Bankruptcy Codes 2006.
Then money supplies. How it is measured in India? There are 4 methods or classification of money supply: M0, M1, M2, and M3. And as an IBBI valuer, money supply helps contextualize credit availability for real estate projects and micro drop-off for corporate insolvency. See here, what is M0? M0 is reserve money. देखिए, Means एक सजेशन है आपके लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, आप ड्यूरिंग दिस सेशन आप एक पेन और पेपर से अपने बुलेट्स पॉइंट्स बनाते रहिए। देखिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है आपको एकदम समझ आ जाए। बुलेट पॉइंट्स बनाइए और जब आपको ये सारी शीट मिलेगी उस वक्त आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। दूसरा, आज से ही एक अलग एक रजिस्टर या डायरी या बुक लगा लीजिए, नोटबुक। जितना भी यहाँ पर लिखा जाता है, सभी जो बताया जाता है वो सभी कोशिश करिए, नोट करिए अपने हाथ से अपनी बुक के ऊपर, और उसको प्रिजर्व रखिए जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप आपके नोट्स तैयार होते चले जाएंगे, बुलेट्स पॉइंट तैयार होंगे जो रिवीजन में आपके हेल्प करेंगे। अभी आपको हो सकता है इमीडिएटली सब कुछ समझ ना लगे, कुछ चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं 10th में, 9th में, 8th में, लेकिन अभी वो रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप उसको नोट करते रहेंगे और बुलेट पॉइंट्स बनाते रहेंगे, छोटा छोटा टॉपिक में लिखिए, जैसे M0 डैश रिजर्व मनी, तो उसके बाद आप यहां पर समझ लीजिए। और उसके बाद जब शाम को रिवीजन करेंगे या पूरे नेक्स्ट वीक आपको पूरा मिलेगा रिवीजन के लिए, तो आपको एटलीस्ट उसको रिकॉल करना आसान होगा कि मैंने क्या पढ़ा था और कहां पर पढ़ा था। यस सर, ओवर टू यू, सॉरी टू इंटरप्ट। so M0, it is also called reserve money. See here, what is reserve money? Currency in circulation plus bank deposits with RBI plus other deposits with RBI. जो RBI ने मनी बनाई है वो जो सर्कुलेशन में है, या बैंक्स ने RBI में जो डिपॉजिट दिया है, या किसी और ने कोई डिपॉजिट रखा है, गवर्नमेंट ने कोई डिपॉजिट दिया है RBI, वो सारा M0 में आएगा। It was approximately 38 lakh crore in 2023. Then is M1. It is called narrow money. नैरो मनी में क्या आएगा? M0 प्लस, अब इसमें M0 में तो RBI वाला और सर्कुलेशन मनी आ गए। M1 में जो है वो क्या आ जाएगा? M0 वाला तो आएगा प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स, means circulation money, bankers deposit with RBI, plus demand deposits of the banks, plus of course other deposits with the RBI. That is M1. Then this is called narrow money. Third one is M2. M2 is broader narrow money. Here it is M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब इसमें वहां पे सिर्फ बैंक था, M1 में पोस्ट ऑफिस वाली सेविंग्स भी इसमें ऐड हो जाएगी, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन रूरल इंडिया वेयर पोस्ट ऑफिस बैंकिंग रिमेन्स डोमिनेंट। नेशनलाइज्ड बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। दैट विल बी कॉल्ड broader narrow money. And the last one is M3, broad money. इसमें M1 plus time deposits with the banks, जो FDs वगैरह है, time deposits with the banks. This most commonly referenced aggregate in RBI policy statement. India's M3 growth rate is key inflation factors. तो टाइम डिपॉजिट M1 में और टाइम डिपॉजिट कर दे, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट नहीं था, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स विद दैट इज M3. So there are 3 to 4 types: narrow money, broader narrow money, broad money, and broader narrow money, and then
broadband. So next there is two things. One is inflation and other one is deflation. Ji Naveen Chandra. One M2 and Ji sir. please explain, sir, again M0, M1, M2 and others. हाँ जी. कृपया सर दोबारा ये मनी जो आपने किया है उसको रिपीट कर दीजिए सर. आवाज जा रही है सर? हाँ जी. जी जी सर. इसको कृपया एक बार और रिपीट कर दिया जाए सर. जी सर कर देते हैं सर. There are four types of classification of money in India. First one is reserve money, which is called M0. Okay. M0 में क्या आएगा? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस जो आरबीआई के पास पैसा जमा है बैंक्स का या गवर्नमेंट का पैसा या कोई और डिपॉजिट है वो जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल आरबीआई का है, दैट इज रिजर्व मनी. अब नैरो सेकंड टाइप इज नैरो मनी. नैरो मनी में क्या है कि बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स है जनरली सेविंग्स या और दैट M0 plus demand deposits of bank plus other deposits with the RBI, that will be narrow money, that is M1. And second one is broader narrow money. Broader narrow money में M1 भी आ जाएगा बैंक्स वाला, और जो पोस्ट ऑफिस में है मनी किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट है वो इसमें ऐड हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड M2 ब्रॉडर नैरो मनी. एंड द लास्ट वन इज ब्रॉड मनी. इसमें जो है टाइम डिपॉजिट्स जो बैंक्स में है, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में, वो इसमें ऐड हो जाएंगे M1 में. दैट विल बी कॉल्ड ब्रॉड मनी. सर ये जो शीट्स है वो आपको मिल जाएगी शाम तक, आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी. संदीप जी का नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में देयर आर टू थिंग्स. वन इज इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन में जैसे आप एक टायर में हवा भर दो, ज्यादा हवा भर दो तो वो फूल जाएगा, कोई चीज हो गई इन्फ्लेशन. और हवा निकाल दो तो डिफ्लेट हो गया टायर. कोई चीज है यहाँ पे. इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, मींस sustained and general rise in the price level of goods and services in an economy over a period of time, that is called inflation. Sustained and general rise in price level of goods, if they are increasing, it means there is inflation, and most of the time there is inflation. So it is measured and by government at time to time issues consumer price index and wholesale price index. कुछ समय के बाद चेंज किए जा सकते हैं, जहां से ये पता चलता है कि महंगाई की दर क्या है. जैसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, दे आर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन मींस कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. एनीबॉडी, अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. What will be the effect of inflation? Anybody? So basically what will happen? It will erode the purchasing power of money. Mean same rupees buys fewer good over time.
कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा था, जो 1000 रुपए की जितने ही आप पेट्रोल ले रहे थे, तो अगर प्राइस का बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अगर आपको 10 लीटर मिल रहा था तो अगर 110 हो गया तो वो 10 लीटर नहीं मिलेगा. Your purchasing power of money will be reduced, will be eroded. जी निशी जैन जी, do you want to say anything? सर डिमांड घटेगी. हाँ जी, तो डिमांड डिमांड तो घटेगी. वो तो ठीक है, डिमांड घटेगी, बट इन्फ्लेशन का क्या होगा? बेसिकली क्या होगा कि हमारी जेब पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी. चीजें, हाँ चीजें कम जो मिलेगी. चीज हम 1000 रुपए का, अगर पेट्रोल 10 लीटर आ रहा था, अगर 100 रुपए लीटर था, तो अगर 110 हो जाता तो फिर हमें 10 लीटर नहीं मिलेगा विद द सेम अमाउंट. दैट इज इन्फ्लेशन. जी आशुतोष जी. जी नवीन चंद्रा जी, डू यू वांट टू से एनीथिंग और आस्क एनीथिंग? ओके, सो if the inflation is growing, our purchasing power is reducing. What are the causes of inflation? अब देखिए निशी जी, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि डिमांड कम होगी. अब डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी. अब इसका उल्टा भी है. तो एक्सेसिव गवर्नमेंट डिमांड साइड्स में, अगर डिमांड है, डिमांड की वजह से कैसे हो सकता? एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो 1000 रुपीज का है और वो 2000 रुपीज जो है वो खर्च कर रहे हैं. फिजिकल डिफिशिएंट फाइनेंस, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी. देन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर प्रिंटिंग आरबीआई जो है वो बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन में वो पहले 1 लाख के नोट 500 डाल रही थी और 1 लाख की बजाय 1,10,000 डाल दी, तो पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया, सर्कुलेशन में ज्यादा आ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. राइजिंग कंज्यूमर इनकम, अब इनकम कंज्यूमर की बढ़ेगी, क्रेडिट एक्सपेंशन हो रही है, तो वो ज्यादा चीजें बाय करने चाहेगा, ज्यादा पर्सन बाय करना चाहेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो बोरोइंग बढ़ेगी, बोरोइंग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. फॉरेन कैपिटल मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई. जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगी. एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्रिएटिंग डोमेस्टिक शॉर्टेजेस. ये ऑनियन एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, डोमेस्टिक में शॉर्टेज हो गई, प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो दीज आर द डिमांड साइड कॉस्ट. देन सप्लाई साइड, पुअर मानसून लीडिंग टू फूड प्राइसेस स्पाइक. मानसून में बरसात कम हुई, सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे अब होगा, आपने देखा होगा कि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 times हो गया. And maybe that in the coming 10 to 15 days, because crude prices have increased in the global market, petrol prices are bound to increase. That will cause inflation. Then hoarding and black market. So sometimes people involved in hoarding and black market, thereby creating a temporary shortage in the market.
that leads to increase in the prices. Then bottlenecks in infrastructures and logistics. Rising wages pushing up the production cost. And natural disasters disrupting agricultural output. For example, if we take a real world example, in 2022, India's retail inflation hits 7.79%, a multi-year high because of global food and fuel prices post Russia-Ukraine war. So see here it is macroeconomics because of global changes. Inflation was there in India. Though India was not having any direct control over this Russia-Ukraine war. Then what are the effects of inflation? We have already discussed. First of all is erosion of purchasing power. कि आपकी जो purchasing power थी वो कम हो जाएगी. तो मान लो कि अगर 5% इन्फ्लेशन होती तो जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वो इस साल 105 की हो जाएगी. And the amount you can buy with the same amount of money. Reducing the amount you can buy with the same amount. पहली चीज क्या होगी? इन्फ्लेशन की वजह से देयर विल बी इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर. सेकंड विल बी, अगर इफ वी टेक इट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में क्या होगा कि लैंड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर, land prices will increase, construction material cost will increase, and labor wages will increase. And thereby real estate prices will increase due to inflation. So in a booming economy, demand for houses increase as more and more people have higher income to seek to buy homes. And if the new homes does not keep pace with the increased demand, of course the prices of the homes will increase. And then redistribution of income. क्या होगा कि बैंकर ने आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, 20 साल में आपने वापस करना था. आपकी जो प्रॉपर्टी उस समय 15 लाख की थी, 20 साल के बाद वो 30 लाख रह गई. लेकिन जो बैंकर ने आपको 10 लाख दिया था उसको क्या फायदा हुआ? उसकी वैल्यू तो 10 लाख ही रही. ऑफ कोर्स उसको इंटरेस्ट मिला, वो डिफरेंट इशू है. अगर इंटरेस्ट रख के उसको 10 के बजाय 15-16 भी मिलता है तो आपकी प्रॉपर्टी जो 10-15 लाख वाली थी वो हो सकता है 40-45 की होगी. जितना बेनिफिट आपको हुआ उससे लोन लेके, बैंकर का मनी उतना नहीं बढ़ा ड्यू टू इन्फ्लेशन. दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्लियर है? नेक्स्ट इज कि जब इन्फ्लेशन होगी तो आप कुछ चीजें आइटम ऐसी है आपकी अगर इनकम नहीं बढ़ती आपको परचेज तो करनी ही पड़ेगी. तो जो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस वाली बात है, जो आपके पास जो बचा वो कम होगा. अगर कम होगा तो उतनी सेविंग आप कम करोगे. पैसे बचेंगे तो सेविंग करोगे आप. सो इन्फ्लेशन विल डिस्करेज सेविंग्स. ठीक है? दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ inflation, general effect of inflation. Next is inflationary gap.
So what is inflationary gap? Inflationary gap, it occurs when aggregate demand in economy exceeds aggregate supply at full employment. डिमांड जब बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, तो जो गैप है means actual aggregate demand minus aggregate supply at full employment, that is called inflationary gap. Means amount by which planned expenditure exceeds the full employment output, causing the prices to rise rather than output to increase. कि आउटपुट तो इंक्रीज नहीं हो रही, होगा क्या, आप प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतनी आप दे नहीं सकते, क्योंकि उतने पैसे में आप उतना प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। पहले आप मान लो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बनाते थे, आपको 1,000 का पड़ता था, और जितने आपको 100 प्रोडक्ट चाहिए थे, 100 बिल्डिंग्स चाहिए थी, मिल रही थी। अब वो 1,000 के बजाय प्रोडक्ट की कॉस्ट वो 2,000 हो या 1,500 हो गई, लेकिन आपके पास पैसे तो उतने ही हैं, आप उतने प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा सप्लाई और डिमांड के बीच में। दैट इज कॉल्ड inflationary gap. For example, in rapid economic growth, if consumer spending and investment outpace the economy's ability to produce goods and services, कि आप कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही है वो उसी स्पीड से नहीं हो रही जिस स्पीड से उनकी इनकम बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, दैट विल affect in, and there will be inflationary gap. And there is difference between availability and supply. So next is how this inflationary gaps can be controlled. Or inflation or inflationary gaps can. First one is policy implications. So how the government can control this inflationary gap? For that, RBI must reduce aggregate demand through raising repo rate. अब रेपो रेट क्या आता है, कि वो रेट जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, अब अगर वो लोन का रेट बढ़ेगा, जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है, मान लो वो 4% पे देता है, 4 की बजाय वो 5 कर देता है, तो उसी हिसाब से बैंक वाले भी रेट इंक्रीज करेंगे आपके, उन्होंने जो कंज्यूमर को लोन देना है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोइंग कम होगी, बोरोइंग कम होगी तो नेचुरली इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो रेपो रेट ये चीज है, रेपो रेट। जी प्रमोद कुमार जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? प्रमोद कुमार जी अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए। So second is on the government part, government can control inflation by reducing fiscal deficit. फिजिकल डिफिसिट आप समझते हो कि गवर्नमेंट की इनकम में और स्पेंडिंग में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, दैट इज फिजिकल डिफिसिट। तो इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू रिड्यूस दैट फिजिकल deficit, it will lead to reduce in inflation. Then increasing taxes to reduce disposable income.
अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो लोगों को पास जो खर्च करने वाली इनकम है वो कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी तो आप डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, एंड देन रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। If the government reduces the expenditure on public infrastructure or public programs, these are the measures. Then second is monetary measures. Monetary measures, these are done by central bank and India. And in India, it is the Reserve Bank of India. What it can do, we have already discussed repo rate. देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है विच इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। तो यहां पर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहना है, इसका आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक लिखा होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसका आंसर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलवेज। Central Bank in India is termed, Reserve Bank of India is termed as Central Bank in India. Okay, इसको कंफ्यूज मत करिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है और काफी लोगों को आया हुआ है। वहां पर आप सोचेंगे सेंट्रल बैंक, अरे सीबीआई होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग सभी उसके पैनल में हैं, अरे वही होगा, बहुत बढ़िया, मुझे तो आता है। लेकिन दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। यस सर, ओवर टू यू। So repo rate we have already discussed. It is the rate at which the RBI lends to the commercial. तो जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी उस समय February 2023, RBI raised the repo rate by 250 base points. BPS is base point means by 2.5%, from 4 to 6.5%. जिसकी वजह से लोन डिमांड एंड रियल एस्टेट स्पेकुलेशन में फर्क पड़ता है। सेकंड इज कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या है कि बैंक में अगर मान लो 10 लाख का डिपॉजिट है किसी बैंक ब्रांच में, वो ऐसा नहीं है कि 10 लाख का 10 लाख ही लोन पे दे देगा, कुछ पैसा उसको रिजर्व रखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो के 10 लाख में से वो मान लो 4 लाख लोन दे सकता है या 5 लाख लोन दे सकता है, 50% दे सकता है या 40% दे सकता है। तो अगर वो बड़ा कैश रिजर्व रेट पिटा देंगे, अगर पहले वो 5 लाख दे सकता, आप कह दिया कि आप वो 4 लाख दे सकते हो, 40% की बजाय आपने कैश रिजर्व रेशो 50% करनी है कि आप 4 लाख की बजाय अपने पास 5 लाख रखो। इसका मतलब बैंक के पास जो रिजर्व होगा बढ़ जाएगा, रिजर्व रखना बढ़ जाएगा, तो जो लोन जितना अमाउंट वो लेन दे सकते हैं वो कम हो जाएगा। सो बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशो, मनी सर्कुलेशन विल बी रिड्यूस्ड एंड देयरबाय इन्फ्लेशन विल बी रिड्यूस्ड। तो किसी तरीके से मनी सर्कुलेशन कम करनी है इन्फ्लेशन में, आपने वो कैसे कर सकते हैं, वो चीजें आएंगी यहाँ पर। तीसरा है स्टूचरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। अब SLR क्या है कि आरबीआई कहता है कि आपने रिजर्व तो रखना है, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़े। मींस बैंक्स मस्ट होल्ड ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ अमाउंट उनको NDTL में इन्वेस्ट करना पड़े। वो क्या कह रहा है, इसको अगर समझना हो कि मान लो द बैंक हैज ए टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 100 crores and if SLR is 18%, what does this mean? It means it must maintain 18% in liquid cash. Means कि उनके पास 18% लिक्विड कैश के
तौर पे होना चाहिए, मीन्स either in the form of money or in the form of government security or in the form of gold. उस फॉर्म में कम से कम 18 करोड़ होना चाहिए, अगर 100 करोड़ उसका टोटल डिपॉजिट. दिस इज व्हाट द SLR ratio is. Then open market operations. So RBI buys or sells government securities in the open market. Selling securities absorbs liquidity from the system. अब क्या करेंगे, यहाँ पे RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो RBI बाय करता है. अगर वो ज्यादा बाय कर लेगी, इट मीन्स जहाँ वो ज्यादा सिक्योरिटीज मार्केट में ले आएंगे. सेलिंग सिक्योरिटीज अब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम, कि वो गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू कर देगी कि आपको इतने % इंटरेस्ट मिलेगा. लोगों ने उस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग दैट अमाउंट. तो सर्कुलेशन से मनी निकल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चला गया. तो किसी तरीके से हमने सर्कुलेशन मनी को रिड्यूस करना है तो वो इन्फ्लेशन अपने आप रिड्यूस हो जाए. नेक्स्ट इज रिवर्स रैपिड रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे RBI बैंक से लोन लेता है, borrows from the commercial bank, the raising the rates incentivize banks to park funds with the RBI. तो अगर ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स वाले RBI को लोन दे देंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि इट इज मोर सेफ. तो जनरल पब्लिक की बोरोइंग कम हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ के बैंक्स रिजर्व बैंक को लोन देना शुरू कर देंगे, जिससे सर्कुलेशन मनी रिड्यूस हो जाएगी, उससे इन्फ्लेशन अपने आप रिड्यूस हो. These are monetary measures which is done by the Central Bank of India or Reserve Bank of India. Then first was policy implications, which was done by the government. Second is monetary measures, which is done by the RBI. And the third one is fiscal and direct measures. Reducing fiscal deficit. अगर गवर्नमेंट की जो है फिजिकल डिस्प्यूट कम हो जाता है तो इट मींस गवर्नमेंट बोरोइंग कम हो जाएगी, मींस लेस मनी क्रिएशन. देन इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस. If the taxes are increased, there will be less money in the circulation. Inflation will reduce. Reducing subsidies. Cutting capital expenditure. Increasing indirect taxes. Direct and indirect taxes, you know. And then surplus budget. Withdrawing purchasing power from the economy. And then direct measures are government what the government can do. They can fix a maximum price for essential commodities. They can distribute scarce gold through public distribution system. They can, if the supply is to increase the supply, they can import goods from the other countries to bring down the prices. And if certain persons are doing holding, they can take action against them. Means anti-holding drives they can carry out. And then they can put a rider or prevent wage price spiral. So this is about inflation, and its opposite is deflation.
both are not goods for an economy. Inflation as well as deflation, both are not good for inflation. So inflation was increase. Deflation is, see here, it is there it was increase, general increase in price level across the economy. Here it is general decline in the price level. It is opposite of the inflation. अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन क्या करती थी, परचेसिंग पावर कम करती, डिफ्लेशन क्या करेगी, prices, it will cause fall in prices, goods will become cheaper. But see here, this is, तो ये ऐसा नहीं है कि डिफ्लेशन अच्छी है. Deflation is more dangerous than inflation. लोगों के पास, आपके पास जेब में पैसे होंगे लेकिन सामान नहीं मिलेगा. Deflation is widely considered as more dangerous than moderate inflation because it creates a vicious cycle of falling demand, rising real debt burdens, and economic stagnation. तो ये जापान में हुआ था, लोगों के पास पैसे थे, सामान नहीं मिलता था. That is called lost decade in 1990s. And in India also, we have an example during 2015-16 when there was deflationary trends in the wholesale price index. Yes, sir. So what are the causes? Demand side causes collapse in consumer and business confidence, excessive monetary tightening by RBI, credit crunch, asset price collapse, etc. And supply side causes of deflation are technological improvement, oversupply in key sectors, decline in global economy, commodity prices, and import surges. So what are the effects of deflation? डिफ्लेशन की वजह से क्या होगा कि डेट इंक्रीज हो जाएगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है वो डिले हो जाएगी, कि वो सोचेगा कि और प्राइसेस कम होते जाएंगे. तो उसकी वजह से देयर विल बी फॉल इन कॉर्पोरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, एंड इट विल लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड कोलैप्स ऑफ रियल एस्टेट एंड लैंड वैल्यूज. There was inflationary gap, there is also deflationary gap. So this is a mirror image of inflationary gap. So when aggregate demand falls short of aggregate supply, जितनी सप्लाई हो रही है उससे कम डिमांड है, then we call it as deflationary gap. Then how this deflationary gap can be controlled? So अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका उल्ट करना पड़ेगा. आपको वहां पे सप्लाई कम करनी थी, यहाँ पे सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. तो रेपो रेट जो है आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. वहां पे रेपो रेट इंक्रीज किया था, यहाँ पे रिड्यूस करोगे. CRR और SLR आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. और RBI को ऐसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे दैट दे हैव टू इंजेक्ट मनी इन द मार्केट. फिस्कल डिफिशिट में पब्लिक एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंक्रीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करने पड़ेंगे, उसका सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे। और डिफिशिएंट फाइनेंसिंग जो है, गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर देन इट अर्न्स, दिस डिफ्लेशन गैप को करने के लिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सेविंग इंक्रीज कर सकते हैं। सेविंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, लोगों को करना या इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो अपने आप हाउस होल्ड सेविंग्स, कारपोरेट सेविंग्स और गवर्नमेंट सेविंग्स वो और फॉरेन फॉरेन सेविंग्स, ये सब जब बढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट सेविंग्स के ऊपर बढ़ेगा तो अपने आप ये सारी चीजें बढ़ेगी, जिससे डिफ्लेशनरी गैप्स जो है वो कम होता जाएगा। सब कुछ जो वहां पे इन्फ्लेशनरी गैप में था यहाँ पे उल्टा होता जाएगा। ठीक है, तो सेविंग जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? सेविंग डिपेंड करती है लेवल ऑफ इनकम। हायर द लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द consumers, higher will be the savings. If the interest rates are higher, higher will be the saving. If the banks इसमें इन्वॉल्व होते, जैसे आपने देखा कि 2015-14 में जनधन योजना के 50 लाख बैंक अकाउंट्स खुल गए, उसकी वजह से सेविंग इंक्रीज हो गई। That this has significantly increased the channeling of saving into productive investment. Then demographic factors and social security. तो अलग अलग सोसाइटीज में सेविंग्स की अलग अलग ट्रेंड्स है। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे जब भी कोई उनके यहाँ कोई बच्चा होता है वो वहीं से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं कि जब इसकी लिए हमें हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा तो इतना अमाउंट हम ले सकते हैं। तो वो that is demographic factors and social security depending upon different societies. So there are different types of investment. Autonomous investment, it is not influenced by income level, that is called autonomous investment. Then induced investment, government induce this investment to correlate it with the income. Rises GDP grows, private real estate development during. Then public investment, private investment and foreign investment. So there are different types of investment. So what are the different determinants of investment? First is the rate of interest. If the rate of interest falls, as investment तो fall होगा तो investment बढ़ेगी, अगर interest rate reduce होगा तो अपने आप investment बढ़ेगी. Expected rate of return. So investment occurs when you got more return from the investment. अगर आपको पता है कि मैं आज 10 लाख लाके मेरे को 15 लाख मिल जाएगा, then it is called, that will increase the investment. Then if it is people are having confidence in investment, business confidence, they will invest more. Depending upon the government policy, they will invest more in the investment, and availability of credit we have already discussed. So relationship between savings and investment. If you are having more savings, higher rate of interest, there will be more savings. And if there is more saving, it means people will be having more money to make investment. Then there are components of economy. There are 3 components of economy: primary component, secondary and tertiary component. Primary components, primary sector, that sector which involves extraction and harvesting of natural resources, such as agricultural, farming, crops, livestock, etc. This is called primary sector.
Then mining also comes under the heading of primary sector. Mining, fishing, forestry, agriculture sector, that is all comes under the heading of primary sector. Then secondary sector focuses on manufacturing and processing. For example, manufacturing of cars, electronics, textiles, then construction sectors. Then देखिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर कौन सा है और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है। वहां पर आपको एक एग्जांपल दिया होगा और नीचे पूछा होगा प्राइमरी सेक्टर है कि सेकेंडरी सेक्टर है, या ऊपर एग्जांपल दिया होगा, नीचे 2-3 सेक्टर्स लिखे होंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन के प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं और सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं इन इकोनॉमिक्स। ओवर टू यू सर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विद इन परमिसिबल टाइम लिमिट आपको पूरा करा दिया जाए। यस सर, ओवर टू यू। then is informal sector. Informal sector, it is also called unorganized sector. It comprises of economic activities that are not registered, regulated, or captured in official statistics. That is called informal sector. But it is backbone of Indian urban employment and major player in real estate and construction. What are the characteristics of urban informal sector? It employs approximately 90% of India's total workforce. It accounts for 50% of non-agricultural GDP. Transactions often in cash, creating parallel financial flows. So in informal sectors, what are involved? Street vendors, domestic workers, constructional laborers, small workers, and automobile rickshaw operators. All such workers comes under informal sector. They are not covered by labor laws, EPF and ESI, and it is highly vulnerable economic shocks because during COVID, this wiped out informal sector's earnings in the months. ठीक है संदीप जी, we can have a lunch break, so we will complete the syllabus after. Yes sir, yes sir. So friends, let's have a